Good morning, church. Thank you, Anandita, for reading that portion of the scripture. So, as you all know, we are meditating or we are studying from the Old Testament, and we are talking about heroes of the Old Testament, right? So, we have covered so far 2 heroes. Anybody remembers who are these? So, we have talked about Moses, we have talked about Joshua. And in continuation with that, right, we know that after Moses, Joshua took over the reins, right? मूसा के बाद यहोशू जो था उसने इजरायली की कमान संभाली और उनको वो आगे लेकर चला. But now today we are going to talk about somebody who's not known that much, but then he's equally important, right? He's known for different reasons, but he's important, and he's very closely associated with Moses, right? So what we are talking about is we are talking about Aaron. And we know Aaron was the first high priest. जो पहला महायाजक इजरायली का बना था वो हारून था. आज हम हारून के बारे में बात करेंगे. But through the life of Aaron, what we are going to see is God's grace for the imperfect, right? जो अपूर्ण लोग होते हैं, जो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह या परमेश्वर की कृपा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. Okay? In the Bible, if you look at it, the name Aaron, any idea what is the meaning of this name? हारून शब्द जो है उसका मतलब क्या है? What does it mean? It is normally translated into exalted, strong, or a mountain of strength, right? महान, शक्तिशाली या शक्ति का पर्वत, प्रतीक, right? That is what Aaron means. हारून शब्द का मतलब ये है. It's a Hebrew word. And it denotes or it is associated with steadfastness and spiritual leadership, right? So ये दृढ़ता और आध्यात्मिक नेतृत्व जो है उसका प्रतीक माना जाता है. So that's the name Aaron. But what do we know about Aaron? What comes to your mind when you talk about Aaron? Brother of Moses. First thing, brother of Moses, right? किसी की पहचान लेकिन उसके भाई से, वो भी कोई बड़ा भाई नहीं, छोटे भाई से, राइट? ही इज द ब्रदर ऑफ मोसेस. व्हाट एल्स? गोल्डन काफ, उसने सोने का बछड़ा बनाया, राइट? वी नो हाउ ही ऑफेंडेड, ही वेंट अगेंस्ट गॉड्स लॉ एंड ही क्रिएटेड दिस गोल्डन काफ. सो ही इज नोन फॉर सम ग्रेट थिंग्स दैट ही हैज डन. व्हाट एल्स? स्पोक्स पर्सन. ही इज द स्पोक्स पर्सन. वो मूसा का प्रवक्ता था. मूसा के लिए वो बोलता था, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था. ही इज द हाई प्रीस्ट, राइट? फर्स्ट हाई प्रीस्ट. Okay, I would like to just take you a little bit back before we come and talk about Aaron. We'll look at these things, but I would like to take you a little bit back and just try to talk about Aaron's existence before that. So Aaron, what is the tribe Aaron is coming from? लेवी वंश से है. ही इज फ्रॉम द लीवाइट्स, राइट? एंड वी नो लीवाइट्स आर द प्रीस्टली जनरेशन, राइट? सो दैट मीन्स ही इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ लीवाई, राइट? एंड हु इज लीवाई? ही इज द थर्ड सन ऑफ जेकब एंड, थोड़ा मुश्किल है, रेचल था कि लिया था? Leah. He is the third son of Jacob and Leah, right? Great grandson of Levi, and Levi is the third son of Jacob and Leah. And who was the son of Levi? Levi is the great grandson, right? So after Levi, there would be somebody else. So that's Kohath, who is the son of Levi, and then Amram, who is the son of Kohath. Right? So that's basically the kind of family tree. So if you just look at that, Jacob and Leah, you have Levi, who's the third son, and then you have Kohath, who's the son of Levi, and then you have Amram, who's the son of Kohath, and then you have Aaron. Right? So Aaron is the great grandson of Levi. This genealogy is given to us in 1 Chronicles chapter 6 verses 1 to 3. पहला इतिहास उसके छठे अध्याय में हमको इसके बारे में बताया हुआ है. Very clearly this has been told to us.
right? So a little bit about the family part of this thing. Parents of Aaron, Amram and Jochebed, right? Anything strange about this? Aaron के मम्मी पापा हैं. Anything strange about this? Okay, you probably can go and read a little bit detail in Exodus chapter 6. Jochebed is Amram's aunt. जोकाबेद जो है वो आमरम की बुआ है, राइट? हु इज आमरम्स फादर? कोहात. सो जोकाबेद इज कोहात्स सिस्टर, लीवाइस डॉटर, राइट? कोहात सिस्टर. आमरम मैरिड हिज आंट. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सोचने में, और जब आप सोचते हो एरन के बारे में आप सोचते हो, एंड देन यू सी जोकाबेद इज मदर और great aunt, you kind of think about that. Okay, so that's the parents, but you can read the details in Exodus chapter 6. Then he has siblings, right? Who are the siblings? Miriam and Moses. Moses is younger to Aaron, but Miriam is older to Aaron. So Aaron comes in the middle. Miriam is the oldest. Do we know about that? How do we know Miriam is the oldest? राइट. सो व्हेन वी सी रीड इन एक्सोडस, जब मूसा को पानी में बहाया गया था, बास्केट में डाला गया था, तो मिरियम वहां पर थी जो उसको देख रही थी. और जब फिरौन की बेटी ने मूसा को लिया, व्हेन शी फाउंड मोसेस, देन मिरियम वाज द वन हु वेंट एंड सजेस्टेड दैट आई विल फाइंड अ मदर टू नर्स दिस पर्टिकुलर चाइल्ड. सो शी कुड स्पीक एंड शी कुड इंटरैक्ट. सो ऑब्वियसली शी इज द एल्डेस्ट वन, राइट? सो मिरियम, एरन, एंड देन देयर इज मोसेस. सो दीज आर द सिबलिंग्स. Then we have Aaron's wife, who's Elisheba, who's the daughter of Aminadab, and he's from the tribe of Judah. And then we have sons of Aaron, 4 sons, and we know the story. 2 sons died, and then the remaining 2, out of which Eliezer was the one who continued as the high priest. So this is basically the family tree, or a little bit of historical background from where he's coming. What is his background like? So when you talk about the Old Testament, we are talking about the Old Testament heroes. We talked about 2 wonderful heroes. Moses, he's known as the lawgiver. He gave the law, right? He's also known as the one who parted the Red Sea, right? He is known as God's visionary. Incredible thing he has done, right? And then we know that he was succeeded by Joshua, who's known as the warrior, right? We know about Jericho. जेरिको की दीवार कैसे गिर गई, राइट? यहोशू के द्वारा, राइट? सो दीज आर 2 great leaders, and we know the greatness of what they have done. But when we talk about Aaron, what comes into our mind, as rightly said, is the golden calf, right? उसने सोने का बछड़ा बनाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. He was disobedient, right? And there was a consequence, there was a price to be paid. Right? He also complained with Miriam against Moses, right? So वो होता है ना, जाके बड़े या छोटे के खिलाफ यू आर कंप्लेनिंग, भैया इसको क्यों सारी वो मिल रही है, आई एम ऑल्सो ग्रेट, मैंने भी इतने काम किए हैं, राइट? सो देर इज अ कंप्लेंट फैक्टर ऑल्सो विथ मिरियम. ही इज कंप्लेनिंग. एंड वी ऑल्सो सी अ डिसोबीडियंस एट मरीबा, वेयर अलॉन्ग विथ मोसेस दे डिसोबे गॉड. जब पत्थर को स्ट्राइक करके उन्होंने पानी निकाला, राइट? सो देर इज certain things, failures, for which Aaron is known, right? But today we are going to learn from his life. Today we are going to talk about his life. We are going to see from his life, right? There are many things that you can learn from the life of Aaron, right? Even if you look at every particular event in his life, let's say the passage that we read where God called him to be the mouthpiece for Moses, you can talk about that. There is a lot of learning from there. You can talk about his failure from the golden calf. You can talk about what he did at Mariba, right? But through his life, what we want to focus on is God's grace. So, हारून की लाइफ से हम 3 बहुत पावरफुल जो सच है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, गॉड यूजेस इम्परफेक्ट पीपल. परमेश्वर अपूर्ण लोगों को इस्तेमाल करता है अपनी प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? सेकेंड, वील टॉक अबाउट गॉड गिव्स अस अ रोल एज ऑफ इंटरसेशन, right?
परमेश्वर हमको मध्यस्थता करने की भूमिका निभाने के लिए बुलाता है. वी आर कॉल्ड टू इंटरसीड. वी आर कॉल्ड टू स्टैंड बिटवीन गॉड एंड पीपल. थर्ड, we'll look at God values obedience over charisma. परमेश्वर करिश्मे से अधिक आज्ञाकारिता को महत्व देता है. Obedience is more important. Irrespective of your background, what you have done, obedience is more important. So we'll look at these aspects from the life of Aaron. Right? Again, life of Aaron, there are certain events. We'll talk about those events and we'll try to see these learnings as we go along. Okay, first point. Aaron is called the mouthpiece. हारून जो है वो मूसा का प्रवक्ता है. राइट? हम सब जानते हैं एक्सोडस निर्गमन उसका 4 अध्याय 10 से लेके 16 आयत जो हमको हमारे लिए पढ़ी गई थी. हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को बुलाया. गॉड कॉल्ड मोसेस टू बी हिज पर्सन एंड टू लीड इजराइलाइट्स आउट ऑफ इजिप्ट. राइट? बट वी नो मूसा वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. राइट? Moses gave reasons. Last time when Pastor Victor was talking about the life of Moses, we saw those reasons. अलग अलग reasons उसने दिए, कारण दिए कि मैं नहीं जा सकता. Right? मैं सही तरीके से बोल नहीं सकता. I cannot speak. I stammer. Right? I am not confident. I am afraid. What if people will ask me? लोग मुझसे पूछेंगे किसने तुम्हें भेजा है? How do I have this authority? He was not confident at all. Right? So परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, He gave him solution. Right? And he said, look, there is Aaron, your brother. Right? And Exodus, निर्गमन 4 उसकी 14 और 16 इस प्रकार से कहती है, he will speak to the people for you and it will be as if he were your mouth and as if you were God to him. Right? This also means something very important. Right? You are God to him and he is your mouthpiece. He is speaking for you. What do you call this person who is a mouthpiece for God, who speaks for God? He's a prophet, Bhavishyavakta, right? So Aaron is being called as a prophet over here for Moses because God says that you will be God for him and he will speak. He will be your mouthpiece. तुम उसको शब्द देना और वो तुम्हारे बिहाफ पे और तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारा प्रतिनिधित्व करेगा. राइट? हारून ही तुम्हारे लिए लोगों से बात करेगा, तुम उसके लिए महान राजा के स्वरूप में हो रहोगे और वह तुम्हारा अधिवक्ता और प्रवक्ता होगा. Okay, so he is being called as a prophet also. Okay, see the greatness that is being bestowed upon him. Right? Not just a person, not just a brother of Moses, but he is going to be like a prophet. Right? So we see from this, Aaron was gifted in communication. राइट? हारून के पास बातचीत करने की क्षमता थी. वो लोगों के बीच में रहकर लोगों से अच्छे से बातचीत कर सकता था. राइट? ही वॉज कॉन्फिडेंट. अनलाइक मोजेस हु यूज्ड टू स्टैमर, Aaron could speak confidently. So he was kind of people's man. राइट? HR की लैंग्वेज में बोलोगे तो वो लोगों के बीच में ही इज लाइक अ पीपल्स मैन. वो अच्छी तरह से लोगों के बीच में बातचीत कर सकता है, लोगों के साथ घुल मिल सकता है, अच्छे से उनको समझा सकता है. ही इज अ गुड ओरेटर. राइट? मुझे पता नहीं है उसके पास पीपीटी स्लाइड्स होंगी उस टाइम पे कि नहीं कि वो प्रेजेंट कर सकता है, बट इट सीम्स लाइक ही कुड कम्युनिकेट वेल. वो लोगों से अच्छे से बातचीत कर सकता था. राइट? सो हारून बातचीत करने में प्रबल था. सेकेंड थिंग वी सी, दिस इज समथिंग दैट Aaron डिड नॉट आस्क फॉर. इट्स नॉट लाइक Aaron इज सेइंग, ओ मेरे पास ये सब कुछ है, मैं कर लेता हूं. राइट? गॉड इज टॉकिंग टू मोसेस. परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहा है और मूसा ने जब अपनी प्रॉब्लम बताई तो परमेश्वर ने कहा हारून है. Right? So God drafted him into this, not that Aaron was seeking this role. Right? Aaron is not looking for this role, but God knew what his strength was. Right? So sometimes weakness of one person becomes an opportunity for somebody else to step up. Right? कई बारी मुझे लगता है कि मुझे मौके मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं नजर आता है, लेकिन परमेश्वर किसी और की कमजोरी, किसी और की कमी को आपकी ताकत बनाकर आपको वहां पर लेकर आता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद Aaron also. God drafted him. Right? How old he was when he was given this role of being a prophet to Moses? क्या उम्र थी उसकी? Moses was 80.
Aaron was 83. 3 साल बड़ा था मूसा से, right? So Aaron was 83 and Moses was 80 years old. Exodus chapter 7 verse 7 talks about this, right? When he started this, 83 साल का, हमें लगता है हम 60 क्रॉस कर गए, अब तो हो गया लाइफ खत्म, जो करना था लाइफ में हमने कर लिया, जो हमें अचीव करना था अकम्प्लिश कर लिया, राइट? अब इसके आगे क्या? आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी बिताएंगे, राइट? डोंट बी सो श्योर अबाउट दैट. यू नेवर नो, गॉड कैन कॉल यू इवन नाउ इन योर प्राइम, राइट? व्हेन गॉड वांट्स टू यूज यू, एज इज जस्ट अ नंबर, स्पेशली फॉर गॉड. परमेश्वर के लिए आपकी उम्र का कोई मायने नहीं है, राइट? सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, हमें लगता है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी लेकिन हमने परमेश्वर के लिए शायद कुछ नहीं किया. निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर आपको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है. गॉड कैन यूज यू एनी टाइम. आयरन वॉज 83 व्हेन ही स्टार्टेड. दिस इज स्टार्टिंग एज फार एज वी नो. बाइबल में हमें यहीं पे बताया कि यहाँ से उसका शुरुआत हुआ. एनीथिंग दैट वी नो अबाउट आयरन इज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. 83 years old, राइट? सो what do we learn for us? For us it is important, right? Like Aaron, if we see our lives, so many times we see that we are probably in the back, right? We are not acknowledged. We don't have the main role, right? मेरे पास तो स्टेज नहीं है, मैं तो माइक पे खड़े होकर नहीं बोल रहा, right? I'm there, I'm at the back, I'm probably at the outside, right? What about me? When we look at a church, जब हम कलीसिया में देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नज़र नहीं आते. ओके, एज एन एल्डर, एज अ पास्टर, यू माइट बी स्टैंडिंग हियर स्पीकिंग, बट व्हाट अबाउट एन एल्डर्स वाइफ हु इज नॉट हियर, प्रॉब्ली एट द बैकग्राउंड, राइट? व्हाट अबाउट मिनिस्ट्री लीडर्स? लीडर्स फिर भी समझ में आते हैं, कभी कभी आप बातचीत करते हो, मीटिंग्स में आते हैं, बट व्हाट अबाउट असिस्टेंट्स, राइट? They are not acknowledged, they are not there, they are not known, they are not seen, right? What about people who come and help in the church, right? आप हर संडे आते हैं, आपको चर्च एकदम क्लीन मिलता है, but somebody would have come in the week, Monday to Friday, to do that cleaning work. Not known, unknown, right? What about people who help with the Sunday school? Volunteers in the Sunday school, right? What about people who prepare the communion table? ऑफरिंग लेते हो आप या पैसे गिनते हो आप, राइट? यू माइट बी सर्विंग टी, आपने किसी को समोसा या गुलाब जामुन खिला दिया, राइट? ऑल दीज आर स्मॉल एक्टिविटीज, प्रॉबेबली नॉट इंपॉर्टेंट टू यू, और आपको लगेगा शायद आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट दीज आर सपोर्ट रोल्स, राइट? विदाउट दीज रोल्स नथिंग हैपन्स, right? The message of Christ does not come across without these roles, right? So it's not just the one who's standing in the front on the stage with the mic, but it is all these roles that are important, right? Yes, people might not be seeing them, might not be acknowledging them, but remember, God sees. परमेश्वर को ये सब दिखता है, right? हारून को कोई नहीं जानता होगा शायद, लेकिन परमेश्वर को उसकी काबिलियत का पता था. You might have skill and you might feel nobody knows about this skill, कोई मेरे इस हुनर के बारे में नहीं जानता है. God knows, and God will use you at the right time, right? Only thing what He requires from you is to be available. When He calls you, when He gives you that opportunity, you should be ready, you should be available. Okay, so important point for you to remember: are you a voice of wisdom, encouragement, और ट्रूथ फॉर समवन? क्या आप किसी के हारून हो? पास्टर विक्टर ने लास्ट टाइम पे बोला था, आज मेरे पास एक नया हारून है, राइट? सो एवरीबडी नीड्स somebody who can support, right? Everybody needs somebody whom they can depend on, right? So supporting role is very important, right? फिल्म फेयर में इसीलिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को भी अवार्ड दिया जाता है, सिर्फ मेन लीड को नहीं, हीरो हीरोइन को नहीं, बट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को भी दिया जाता है. और याद रखिए कि यहाँ पे परमेश्वर इस बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को अवार्ड जरूर देंगे, राइट? सो दैट इज योर कॉलिंग. क्या आप किसी के लिए बुद्धिमता, प्रोत्साहन या सत्य की आवाज हैं?
राइट। हो सकता है परमेश्वर आपको इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, नॉट टू बी इन द फ्रंट लाइन बट टू बी अ सपोर्ट, not to be speaking through the mic, but to be a voice for somebody, to mentor somebody spiritually, to guide somebody spiritually through your life, through the word, through your prayers. Right? So every small role that you are doing in the church as a part of this body of Christ is important. आप किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझिए, जो कुछ भी आप परमेश्वर के लिए उसके भवन में, उसके कलीसिया में करते हैं, वो जरूरी है. That is important, and that's how the church, that's how the body of Christ, it grows, right? But Aaron was not just doing these small things. He was not just the spokesperson, right? God used him mightily. When Aaron said he is available, right? Aaron did not refuse. परमेश्वर ने बोला तुम्हें मूसा का प्रवक्ता बनना है, तुम्हें मूसा के लिए बोलना है. हारून ने मना नहीं किया. Because he was obedient, God used him mightily. How did God use him? God performed miraculous signs. आश्चर्य कर्म हारून के द्वारा कराए. राइट? जब फिरौन के सामने जाकर वो उसने बात करी तो उसने अपनी जो लाठी थी उसको फेंका और वो सांप बन गई. राइट? The miraculous sign God asked Moses to do with the Pharaoh, Aaron was doing that. Right? And even the plagues, जो महामारियां आई थी इजिप्शियंस के ऊपर, Aaron was the one who brought 4 of them. Right? So God is using Aaron mightily. Right? And when there was war between the Israelites and the Amalekites, right? Aaron was there again supporting Moses. Right? मूसा अपना हाथ उठाता था तो ये लोग युद्ध जो थे जीत रहे थे. They were winning the war. लेकिन जैसे ही वो थक जाता था, हाथ को नीचे करता था, वो युद्ध हारने लगते थे. तब हारून और होर ने मिलके उनके हाथों को पकड़ा ताकि जो इजराइलाइट्स हैं वो उस युद्ध को जीत सकें. तो हारून ने और भी बहुत बड़े बड़े काम किए. राइट? केवल वो मूसा का प्रवक्ता नहीं था. ही वॉज नॉट जस्ट द माउथ पीस, ही वॉज नॉट जस्ट इन द साइड लाइन्स, बट गॉड यूज्ड हिम माइटिली इन द फ्रंट लाइन ऑल्सो. गॉड डिड ग्रेट थिंग्स थ्रू हिम. राइट? अब आप सोचिए, अगर परमेश्वर ने इतना कुछ आपके द्वारा किया हो, इतने आश्चर्य कर्म आपके द्वारा किया, गॉड हैज यूज्ड यू माइटिली एंड ही हैज परफॉर्म्ड दीज मिराकुलस साइंस थ्रू यू. व्हाट वुड बी योर रिलेशनशिप विद गॉड? आपका रिश्ता परमेश्वर से क्या होगा? हम तो कह सकते हैं अगर ये सब मेरे टाइम में हुआ होता, मैं तो बहुत ही दृढ़ पक्का विश्वासी होता. आई वुड नॉट लीव गॉड, आई वुड बी वेरी स्ट्रांग. राइट? दैट वुड बी द थॉट प्रोसेस. If God had done all those things with me in my life, I would have seen these things, I would have been very strong. Right? But that's not the case with Aaron. Right? He made a big mistake. Something goes terribly wrong. Right? And we know this when we talk about the golden calf. सोने के बछड़े के बारे में हम बात करते हैं. Exodus chapter 32. स्टोरी हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, वो सिनाई पर्वत के ऊपर गया और वो वहां पर काफी समय से है. लेकिन जाने से पहले वो बोल गया था कि हारून जो है वो मेरी जगह पे प्रतिनिधित्व करेगा. आरन वुड बी रिस्पॉन्सिबल. राइट? सो आप ये सोचिए, हारून जो है वो इतने बड़े बड़े काम कर रहा है. उसने फिरौन के सामने ही डिड मिराकुलस साइन, ही परफॉर्म्ड द मिरेकल्स एंड ही डिड ऑल दिस थिंग्स. एट टाइम्स समटाइम्स उसके दिमाग में ये भी आता होगा कि सब कुछ तो मूसा को मिल रहा है. Everybody is praising Moses. Everybody is after Moses. Moses is this great leader. Right? God is using me also. What about me? He gets the opportunity now. Right? When God calls Moses, Moses says Aaron would be responsible. Right? So now Aaron has the opportunity. He has been given the leadership. He has been given the post to take care of things. Right? But Moses is gone for a long time. Moses is gone for a long time and people start grumbling. लोगों को पता नहीं है मूसा वापस आएगा भी कि नहीं आएगा. 40 दिन हो गए हैं. Right? And they start grumbling. वो क्या करते हैं? हारून के पास जाते हैं. They go to Aaron and they say, you please make gods for us. तुम हमारे लिए परमेश्वर बनाओ ताकि हम एटलीस्ट किसी को देख सके और किसी की पूजा कर सकें. Remember, Israelites are coming out of Egypt where this kind of idol worship was prevalent. Right? So they knew that there were idols and they knew people used to worship to idols. So they are asking Aaron, please do that for us.
हारून ने क्या किया? What did Aaron do? He is a leader. He has seen mighty works of God. He has seen God working in his life, through his life. He has seen how he has brought them out of Egypt. Yet, when people are pressurizing him, जब लोगों का इतना क्रोध एक तरह से आप कह लीजिए हारून के ऊपर भड़का, हारून ने क्या कहा? उसने गिव इन कर दिया. He gave in to their demands. उसने बोला आप अपने बेटियों के पास, आपकी जो वाइफ्स हैं और आपके बच्चे हैं, उनके पास जो भी सोने की इयरिंग्स हैं, वो सारा सोना लेकर आ जाओ. सोने को हम आग में डाल के पिघला लेंगे. एंड देन ही कार्व्ड अ गोल्डन काफ. उसने एक सोने का बछड़ा उसमें से बनाया. एंड ही प्रेजेंटेड दैट टू द पीपल एंड ही सेड वी विल ऑफर फीस्ट टू दिस लॉर्ड हु हैज ब्रॉट यू आउट ऑफ इजिप्ट. राइट, ही इज ट्राइंग टू वर्शिप with the idol, right? And he's saying we will feast now. Okay, think a person of that status, परमेश्वर ने जिसको इस तरह से इस्तेमाल किया, उसकी ये हालत है. कैसे? लोगों के दबाव में आके, pressure from the people, right? If you look at Exodus, निर्गमन 32:21 से लेकर 24 आयत में, मूसा जब वापस आता है वो क्रोधित है. राइट, गॉड टेल्स मोजेस, भैया तुम यहाँ पे बहुत टाइम लगा लिया तुमने, लेकिन नीचे कुछ गड़बड़ हो रही है, आप जाओ और देखो. राइट, मोजेस कम्स डाउन एंड ही सीज दिस एंड ही इज वेरी एंग्री. मोजेस कन्फ्रंट्स एरन एंड यू नो व्हाट इज द एक्सक्यूज एरन इज गिविंग. मोजेस आस्किंग व्हाट हैव यू डन, राइट, व्हाई यू हैव कमिटेड दिस ग्रेव सिन. राइट, तुमने ये सब क्यों किया, लोगों को इस तरह क्यों लेकर गए. व्हाट इज एरन्स एक्सक्यूज? ही इज सेइंग यू नो हाउ प्रोन दीज पीपल आर टू ईवल. Right? You know how prone these people are to evil. They gave me gold, I threw it into the fire, and out came this calf. Right? Excuse. When Aaron is confronted with the sin that he has committed, what he does? Like what most of us does. We do. Right? We blame somebody else. Right? मैंने तो नहीं किया, इनकी वजह से हुआ है. राइट, ये लोग तो वैसे ही इतने बुरे हैं, बुराई में इतने गिरे हुए हैं, इन्होंने आकर मुझको बोला और उन्होंने सोना लाकर मुझको दिया, मैंने आग में उस सोने को डाल दिया और ये बछड़ा वहां से निकल कर आ गया. ही इज लाइंग, राइट, एंड ही इज ब्लेमिंग अदर्स. ही इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट ही हैज डन. ही इज ब्लेमिंग अदर्स. राइट, most of us we do that when we are confronted, when we are against the wall, when we are pressurized, right, we try to look for an easy way out, and the easy way out is blame somebody else. किसी और के ऊपर ये इल्जाम डाल दो, he is responsible, I am not responsible. Right, not for big things, even for small things also. Okay, yesterday in our home groups we were talking about this, and we were meditating on 1 John chapter 1 itself. We were talking about sin. Right? And we normally said कि it's a normal thing. As Christians, we will not say that I am sinless. We understand that. As Christians, we will not say. हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम पाप रहित हैं, हम पाप नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं बोलेंगे. Right? Because we know everybody sins. But somewhere in our minds also, we will also not claim, we will also not consider ourselves in the category of sinners. When we look at people, right, and we say classify sinners, I do not classify myself as a sinner. Okay, contradictory things. Right, so even when we try to do these kind of things, right, it's like trying to avoid the blame on myself. I'm not trying to even accept that I am a sinner. Right, that's the mentality. Right, but here this is big. Right, he's putting the blame on somebody else, trying to save himself. Right, अक्सर हमारे में से गलती होती है, हम कहते हैं I am only human. तो इंसान हूं, इंसान तो गलती का पुतला है, तो गलती करेगा. राइट, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन. मैं पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हूं कि मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा. बट दीज आर ओनली एक्सक्यूजेस दैट वी आर गिविंग टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द फैक्ट दैट वी आर सिनर्स, वी आर फॉलन पीपल. वी डोंट वांट टू से दैट. वी डोंट वांट टू क्लासिफाई आवरसेल्व्स इन द कैटेगरी ऑफ सिनर्स. दैट्स व्हाट Aaron was doing over here. In front of his brother, who is the great leader, who had given him this responsibility, he doesn't want to paint himself as the person who has done something wrong. So he says, it's these people. But look at a lame excuse.
मैंने सोने को डाला आग में और वहां से बछड़ा निकल के आ गया, राइट? स्टुपिडिटी. सो समटाइम्स व्हेन यू आर कॉर्नर्ड एंड व्हेन यू आर डूइंग दीज थिंग्स, तो आपका माइंड भी आपका साथ नहीं देता. आप जो रीजंस हैं वो लॉजिकल रीजंस नहीं देते हो. दैट्स व्हाट एरन वाज डूइंग ओवर हियर. So from this failure, what do we learn from Aaron's failure? Fear of people for him was greater than fear of God. Whereas it should be the other way around. लोगों का डर जो है वो परमेश्वर के डर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. परमेश्वर का डर जो है वो हमेशा लोगों के डर से ज्यादा होना चाहिए. Right? Bible tells us, what can man do to you? He can only destroy this body. Right? But the Lord can destroy this body and the soul. Right? He has that power. So हमें लोगों से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है. हारून की गलती क्या थी? वो लोगों से डर रहा था. He didn't think about the Lord. He didn't think what the Lord could do. Even after he saw the 10 plagues on the Egyptian, even after he saw the parting of the Red Sea, even after he saw victory over the Amalekites, right? He knew God can do anything. There's nothing that is impossible for God. Still he feared people. Right? So when you are cornered, are you willing to take a stand? Right? So this is Aaron. Fear of people greater than fear of God. Another important lesson for us, spiritual leadership requires a backbone. Right? आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए रीढ़ की हड्डी जैसी मजबूती चाहिए. You need to be strong, standing on what you are believing. Then only you can lead the people. Right? You're not there to please the people. You're not there to follow their whims and fancies. Right? लोग जो आपको कह रहे हैं वो करने के लिए आपको नेता नहीं बनाया गया. आपको नेता बनाया गया ताकि आप उनको लीड कर सको. लीड बाय एग्जाम्पल, लीड इन द वे दैट गॉड हैज आस्क्ड यू टू डू. परमेश्वर ने आपको बताया है कि किस तरह से क्या क्या करना है. परमेश्वर अब तक आपको बताता आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको लोगों को लीड करना है. राइट? बट हियर इट इज लाइक प्लीजिंग द पीपल. So there is no strong backbone in the spiritual leadership over there. Right? So when we talk about spiritual leadership, we need to have a strong backbone. We need to be standing on what we believe and lead the people accordingly. If people are not following that, you should have the guts to tell them this is wrong. Okay? Not to just come and say things that are good to people. You know, there are so many churches where they talk about things that people would like to hear. They talk about things, they talk about messages which they will be interested in hearing. They don't talk about sin that much. They don't talk about the punishment of sin. They don't talk about hell. No, why? Because if you talk about these things, people will get offended. Right? You're not there to please the people. You're there to lead the people, to share God's word, to share it in the truth. Right? So you need to have a standing. You need to have that strong backbone. Right? But you notice what happens even after this. Even after Aaron makes such a grave mistake, इतना बड़ा पाप उसने किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, still after that, God does not remove Aaron. Right? This is purely God's grace. Right? And do you think this happened just like that? क्या ऐसे ही हो गया कि परमेश्वर ने कुछ भी नहीं किया? There was Moses who interceded. मूसा वहां पर था जिसने परमेश्वर से हारून के लिए और लोगों के लिए परमेश्वर से बातचीत की, प्रार्थना की, विनती की कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर ना भड़के और परमेश्वर उनको नष्ट ना कर दे. राइट? सो गॉड वॉज ग्रेशियस एंड ही डिड नॉट डू और ही डिड नॉट रिमूव Aaron. Right? So we see God's grace working out over here. Right? My mistake can be very big. My sin can be very big. But God's grace is bigger than that. आपका कोई भी ऐसा पाप नहीं है, आपकी कोई भी ऐसी कमजोरी नहीं है, या आपका कोई भी ऐसा उल्लंघन जो आप परमेश्वर के विरुद्ध करते हो, इतना बड़ा नहीं है कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को पार कर सके. परमेश्वर का अनुग्रह उन सब से बड़ा है. God's grace is bigger than all that. Right? So when we look at our own lives, जब हम अपने जीवन में अपने लाइफ को देखते हैं, just think, what are the golden calves we have created? हमने कहाँ कहाँ पर सोने के बछड़े बना के रखे हुए हैं. Right? A golden calf is just a easy way out.
Golden calf is just a mechanism where you don't have to take a stand, where you know that this is going to make things difficult. ये मेरे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, मैं उस रास्ते को नहीं अपनाता, मैं आसान तरीकों को अपनाता हूँ. That is creating a golden calf for yourself, right? It might be a compromise you might be doing at your workplace. अपने काम की जगह पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने टाइमिंग्स के साथ, अपने रिपोर्ट्स के साथ, अपने सबमिशंस के साथ, अपने बिल्स के साथ. A kind of compromise. You are making a golden calf for yourself. You don't want to confront, right? Or maybe it might be you are not standing up for what is the truth. Whether it is related to your faith. Why? Because you are afraid. आज के टाइम में अगर मैं अपने विश्वास के बारे में बात करता हूँ तो डर लगता है, किसी ने कंप्लेन कर दी, पुलिस बुला दिया, क्या हो जाएगा, राइट? सो इजी वे आउट, बेटर नॉट से एनीथिंग इवन व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड. बाइबल सेज बी रेडी टू डिफेंड, बी रेडी टू गिव अ रीजन व्हेन पीपल आस्क यू अबाउट योर फेथ, नॉट टू टेक द क्वाइट वे, कि चुपचाप खड़े रहो, कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ बोलो नहीं, कुछ आपको कोई करेगा नहीं, राइट? डोंट मेक अ गोल्डन काफ फॉर योरसेल्फ. इट माइट बी योर रिलेशनशिप विद कोलीग्स. कोई कोलीग बहुत अच्छा कर रहा है तो आप उसके लिए कुछ गलत कर रहे हो, या कुछ गलत सोच रहे हो, या आप उसके बारे में किसी को कुछ गलत बता रहे हो, राइट? एक गोल्डन काफ आप बना रहे हो अपने लिए. इट माइट बी अ सिचुएशन इन योर हाउस, हाउ यू आर डीलिंग विथ योर चाइल्ड, राइट? in order to discipline your child. I see that a lot. In order to discipline your child, right? बच्चा बहुत रो रहा है, चिल्ला रहा है, आप उसके साथ समय बिता सकते हो, आप उसको प्यार से समझा सकते हो, लेकिन आसान है कि उसको मोबाइल पकड़ा दो कि वो उसमें बिजी रहेगा. कॉम्प्रोमाइज. बिल्डिंग अ गोल्डन काफ फॉर योर सेल्फ. Why? Because you don't want to take a stand of spending time with the child, to discipline the child, to teach the child the right approach, the right ways, right? Just think about that. What kind of golden calves have you created for yourself? Where are you tempted to make golden calves in our day-to-day lives? So what do we think? It's not possible. हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स तो आती हैं, हम ये प्रॉब्लम्स में हम पढ़ते ही हैं. But there is good news also, what we saw in the end, right? Even after Aaron's failure, that is not his final identity, right? He is not classified as a failure, as a sinner, as a wrongdoer, और उनको आपने गलत लोगों की लाइन में खड़ा कर दिया. He is not counted like that. His identity is not that, right? God forgave him and God still used him, right? And we know that Aaron went on to become the high priest. इजराइलियों के लिए वो महायाजक बनाया गया, right? That's God's grace, right? So once again, your worst failure is not beyond God's grace of your restoration, right? आप कभी भी अपनी लाइफ में उस मोड़ तक नहीं जा सकते जहां से आपको लगता है कि परमेश्वर आपको वापस नहीं ला सकता, right? No mistake is greater than God's grace. So remember that, okay? We think about Peter. Peter denied Jesus, but was he restored? Was he able to come back? Yes. Judas also had a problem. He committed a sin against Jesus. He kind of gave away Jesus. He got him arrested. Was he able to come back from that? No. He was not able to come back. And so what he did, he took his life. Aaron also committed a mistake of making this golden calf. But then was he able to come back from there? Yes. Right? So the important point is the question that you have to ask yourself. It's not that have you failed. The question that we need to ask ourselves is, will you come back? Right? So जरूरी सवाल जो हमें अपने आप से पूछना वो ये नहीं है कि क्या हम असफल हुए, आर वी अ फेलियर, नहीं, ये जरूरी नहीं है. पूछना हमको ये है, क्या आप वापस आएंगे? Can you come back from that failure? Right? By your own strength, no, you cannot. But with God's grace and His strength, you can. Trust in Him. Right? And therefore we are called to repent, confess. Right? So that He can cleanse us again. He can make us whole again. Right? So that is important to remember, that you need to come back from the failures. Failure is not the person, failure is the event. Right? Always remember that. Failure is never the person, failure is always the event. जो आपने वो काम किया, आपने एक प्रोजेक्ट किया, वो नहीं हुआ अच्छे से, राइट? वो प्रोजेक्ट फेल हो गया,
आपको बहुत भारी नुकसान हुआ उसमें, फेलियर इज द प्रोजेक्ट, दैट एक्टिविटी ऑफ डूइंग दैट प्रोजेक्ट. द पर्सन इज नेवर अ फेलियर. इन गॉड्स आइज यू आर नेवर अ फेलियर. God can still use you to do greater things. Okay, always remember that. Third thing we look at is Aaron as the high priest. हारून जो है वो महायाजक है. And we see this in Leviticus, लेव व्यवस्था उसका 8वां अध्याय, and Numbers गिनती उसका 17. In these chapters you will see how Aaron has been called to be the high priest for the Israelites. राइट, और परमेश्वर बहुत अच्छे और अद्भुत रीति से इस सब के बारे में उनको बताता है. महायाजक कैसा होना चाहिए, उसके लिए किस तरह से आपको कपड़े बनाने हैं, बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, द कॉन्सिक्रेशन विच यू सी इन लेविटिकस चैप्टर 8, लेव व्यवस्था के 8वें अध्याय में आप देखते हो कि हारून को जो महायाजक है बनाया गया. दैट इज हिज कॉन्सिक्रेशन. राइट, ही इज बीइंग मेड एज द हाई प्रीस्ट. राइट, बट देन गॉड सेज आयरन को आप बुलाओ, उसके बेटों को भी आप बुलाओ, उनको सारी मंडली के सामने आप उनको अभिषेक करो. राइट, एंड देन यू पुट दीज प्रीस्टली गारमेंट्स ऑन हिम. राइट, उसके ऊपर ये जो आपने वस्त्र बनाए हैं ये सब आप उसके ऊपर डालो. राइट, सो दैट ही इज एबल टू डू सैक्रिफाइसेस इन द टेम्पल. राइट, महायाजक का काम क्या है, लोगों के लिए बलिदान चढ़ाना. राइट, ही इज सपोज टू गिव सैक्रिफाइसेस फॉर द पीपल. And then, as the high priest, he has the privilege of going into the most holy place, holy of holy. Right? अति पवित्र स्थान में वो साल में एक बारी वो जा सकता था लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए. That is Aaron's position now. He has been consecrated as the high priest for Israelites. Right? Some important things over here, the breastplate that has been given to him. राइट, ये परमेश्वर ने बोला कि इसको इस तरह से बनाना है. देयर आर 2 ephod, 2 रत्न हैं जो उसके शोल्डर के ऊपर है, और 12 रत्न हैं जो उसके छाती के ऊपर ये जो बनाया गया है उसके ऊपर है. 12 अलग अलग तरह के पत्थर हैं. राइट, बट आर दीज ओनली स्टोन्स? एनीथिंग स्पेशल अबाउट द स्टोन्स? दे आर रिप्रेजेंटिंग द 12 ट्राइब्स. राइट, इजराइल के जो 12 वंश हैं उनके नाम इनके ऊपर लिखे गए हैं. इवन ऑन द ephods, राइट, द inox दैट इज प्लेस्ड ऑन हिज शोल्डर्स, द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स, 6 tribes on one, 6 tribes on another, they are written. Right, now that is very significant. It tells us that as a high priest, महायाजक के रूप में वो लोगों को अपने सीने से लगा के रखता था, अपने हृदय में बसा के रखता था, और उनका जो बोझ है अपने कंधों पे लेकर चलता था. Right? As a high priest, he is carrying the burden of the people, and he is having the names of the people in his heart. Right? When he is praying for them, when he is interceding for them. Right? So, this is the responsibility of the high priest. Then we see that there are other people in the tribe. Right? ये सारा परमेश्वर का चुना हुआ वंश है. इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर के लोग हैं. And they used to think that we all are God's people, we all are holy, we all are consecrated. So उनमें आपस में वाद विवाद शुरू हो गया कि हारून को ही क्यों, हम भी तो हैं, 12 ट्राइब्स हैं, 12 वंश हैं, आपने हारून को ही क्यों ले गया. राइट, सो आपस में जब ये वाद विवाद शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, गॉड सेड आस्क एवरी ट्राइब टू गिव अ स्टाफ. राइट, हर एक वंश में से एक एक लाठी अपनी देंगे और आप उसको उस मंदिर में रखो, जो तंबू है उसके अंदर रखो, और जिसकी लाठी बढ़ जाती है उसी को मैंने चुना है. राइट, एंड वी सी व्हेन मोसेस डज दैट, Aaron's rod, it sprouted. वो केवल बड़ी ही नहीं, उसमें फूल भी लगे और उसमें फल भी लगे, और ये सारा कुछ एक रात में हुआ. परमेश्वर का चुनाव. राइट, दिस इज गॉड हु इज चूजिंग whom he wants to choose. परमेश्वर जिसको चुनना चाहता है उसको वो चुनता है. राइट, परमेश्वर लोगों के बताए नहीं चलता. परमेश्वर लोगों के गुण, ताकत, सामर्थ्य को नहीं देखता. किसने कितने बड़े काम किए वो नहीं देखता. किसने कितनी गलत काम किए वो भी नहीं देखता. राइट, सो परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर का चुनाव है. राइट, उसमें आप और मैं सवाल नहीं उठा सकते. राइट, दैट्स व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल ओवर हियर. व्हेन गॉड चूजेस, ही चूजेस.
God will choose whom He wants to choose. Biggest example is I look at myself. I can ask this question, why did God choose me? Why not my neighbor who still doesn't know, but he's good, he's kind, he's well spoken, he doesn't do anything wrong? फिर भी परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना? Right? The answer is simple. God chooses whom He chooses. परमेश्वर का चुनाव परमेश्वर का अपना है. Right? It's not like the vote that can be given by somebody else. God will choose. And that's what God wanted to show over here. He's choosing Aaron and He has made that decision. Right? So, when the rivals are challenging, God showed His miracle through this. Only Aaron's rod was the one which budded, the one which had fruits. Right? So, he was made the high priest. So, what is the responsibility now that Aaron has? As a high priest, the priesthood is given so that you can intercede. Right? याजकों का जो काम है वो बेसिकली मध्यस्थता करना है. You are standing between God and people. Right? Sinful people and a holy God. You are standing in the middle. And it is your responsibility to talk to God on the basis, on the behalf of the people. Right? परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना करना, विनती करना, उनका बचाव करना. Right? बाइबल में हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, लोगों ने ऐसा किया. सोदोम और गोमोरा का भी हम जानते हैं. यहाँ पर हमने देखा कि मूसा ने इंटरसीड किया, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो हारून की जान बचाई गई. राइट? सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट, इज टू इंटरसीड. राइट? दे आर कॉल्ड टू इंटरसीड. Aaron stood between God and the holy people, holy God and the sinful people. You and I are called to do the same thing. आपका और मेरा काम भी यही है. We'll just see that in a moment. Right? But it is also important to remember that Aaron was just a typecast. Aaron was just a shadow of whom? He was a shadow of Christ. Right? Because our real high priest is who? Jesus Christ. Right? So we have to remember that Christ is our ultimate Aaron. Right? He is now the high priest who is sitting on the right hand side of the Father, and he is interceding to the Father for you and me. Right? He's praying for you and me. He is the one who's interceding now. Right? Hebrews 5:4, it says, no one can take this honor on himself, but he receives it when called by God, just as Aaron was. Right? इस समान कोई भी अपने पर इस तरह का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी अपने पर नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाता. राइट? सो जीसस इज अ हाई प्रीस्ट. Hebrews 4:14 makes it very clear. He is the high priest interceding on our behalf. Aaron is just a pointer towards Jesus. Aaron is a typecast, is a type of Jesus. He is foreshadowing Jesus. Like we see most of the people, most of the leaders that we see in the Old Testament, they are in a form pointing towards Jesus. So Aaron, like a high priest, he's pointing towards the ultimate high priest. Aaron is not alive. He died. Right? But Jesus, the high priest, is alive. He's living. And therefore he can intercede on your behalf, on my behalf, every day. Right? Whatever we may be going through, whatever we may be committing as sins, Jesus is there to intercede that. Okay? Look at 1 Peter 2:9. It very clearly says what is your responsibility and my responsibility. Right? It says, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. किंतु तुम एक चुने हुए लोग हो, याजकों का एक राज्य. We are priests. Right? That means you and I carry the same responsibility that Aaron carried. Right? We are supposed to intercede on behalf of the people. Right? So many times we have seen examples in the Bible when we intercede because of some holy people, because of some righteous people, a lot of sinners are spared. A lot of sinners are saved. God's wrath is not poured on them.
right? And that's the responsibility that is given to you and me to intercede on behalf of people. So the question is, who are you consistently praying for? Do you have people in your heart? Do you pray for them? Right? Aaron's job, whenever he was in the temple as a high priest, he was wearing that robe, he was carrying the names of the people in his heart on his shoulders, their burden on his shoulders. Do you have burden for people? क्या आपके ऊपर लोगों के लिए बोझ है? क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हो? Right? Your responsibility as a high priest to intercede for this. Okay, so Aaron has been made as the high priest, but that's not all in his life, right? Then comes a defining moment in his life when everything is kind of thrown, right? And that's the last point that we see, the waters of Meribah, right? And again we see in Ginti 21 to 13, Numbers 21 to 30, we see that people are grumbling, log jo hai bahut hi gusse mein hai, right? And they are angry because they don't have water and all. So they go to Moses and Moses goes to the Lord. The Lord tells him what he has to do, right? He says, go and speak to the rock and the water will come. So Aaron and Moses, they go, right? But see what they are doing. When you look at Numbers 20, 10 and 11, he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and the livestock drank. Right? What God is asking him to do, what he is doing. Right? God said, go and speak to the rock. आप जाके उस पत्थर से बोलो और वहां से पानी आएगा. But Moses is angry. He's angry at the people. He's angry that God has done so much for the people and these people are still complaining, these people are still whining. इतना कुछ परमेश्वर के करने के बाद भी लोग इतना कुड़कुड़ा रहे हैं, इतना कंप्लेन कर रहे हैं, इतना बार बार आके हमको बोल रहे हैं. तो गुस्से में आकर वो कहता है, अब हम तुम्हारे लिए क्या इस चट्टान से पानी को निकालें? Right? He's in anger. अब हम, right? He's talking about himself and Aaron. Both Moses and Aaron are going there, but he's talking about that, right? So you can see what is happening over here. You may be a great leader. You may be a big leader. You might have done mighty things for God. God might have used you mightily, right? But one moment where you have lapsed, एक क्षण जहां आपने अपने फोकस को परमेश्वर से हटाकर इंसानों पर लगा लिया या अपने सिचुएशन पे लगा लिया, अपने सर्कमस्टेंसेस पे लगा लिया, you lose everything. Right? The consequences were severe. You lose everything. Irrespective of what you have done in the past. Right? You have to see what is the responsibility that is given to you. What is it that God is asking or expecting out of you? Right? You see, God tells them in Numbers 20:12, God tells them, because you did not trust in me enough to honor me as a holy in the sight of Israelites, you will not bring this community into the land I will give them. Right? परमेश्वर ने उनको बोला क्योंकि तुमने मेरा आदर लोगों के सामने नहीं किया, राइट? इनको मैं जो वाचा का जो देश है जो मैं इनको देने जा रहा हूं वो इनको मिलेगा, लेकिन तुम इनको वहां पर लेकर नहीं जाओगे. यू विल नॉट एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड. राइट? यू आर नॉट गोइंग टू एंटर द प्रॉमिस्ड लैंड. अब यहां पर एक सवाल उठ सकता है, देयर इज कुड बी अ क्वेश्चन. दिस इज ऑल मोसेस दैट इज डूइंग. Moses went and he struck the rock. Moses went and he spoke to the people. What did poor Aaron do? Right? Aaron could say, I didn't do anything. It was Moses only. He only said to the people. He only struck the rock. Musa ने ही सब कुछ किया. मैं तो वहाँ पे खड़ा था खाली. Right? But it becomes complex because when you are standing over there, right, and you are a leader, and you are a high priest, and you are a representative of God, you are a mouthpiece for Moses. It becomes your responsibility. Right? You see the verse over here, it says, listen you rebels, must we, right? He's talking about the two of them. वो दोनों की बात कर रहा है. Must we bring water out of the rock? Right? So Aaron is equally responsible.
He joined in the disobedience. Right? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के लिए मूसा के साथ वो भी खड़ा था. He didn't take a stand. He didn't say, Moses, no, this is not right. He didn't say, no, whatever the Lord said, let's do that. He could have argued. Right? He is the elder brother. He also has heard from the Lord. But he decided to take the easy way out, just to stand with Moses, do nothing. Right? Doing nothing doesn't mean you are not equally guilty. You are participating in what was being done. Because Moses is saying that we are going to bring water out of the rock. Right? So Aaron is equally responsible. And as a result, we know that Aaron does not enter the promised land. He dies on Mount Hor. Right? He does not enter. And his priesthood is then taken forward by his son Eliezer. Okay? So what do we learn from this? Something very important. Leadership carries higher accountability. Right? अगर आप नेतृत्व करने के पोजीशन में हो तो आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और आपको ज़्यादा जवाब देना पड़ेगा. Right? Your responsibility is much higher. Right? Your accountability is much higher. James 3:1, it says, not many of you should become teachers. Right? Then it goes on to say, because you will be judged more strictly. तुम में से बहुत से उपदेशक बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उपदेशकों को और अधिक कड़ाई के साथ न्याय किया जाएगा. जब आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, when you have given more responsibilities, you will be asked more. You will be accountable for more. Right? And you will be judged more strictly. Right? So leadership carries a higher accountability. One unguarded moment can have a lifelong consequence. एक पल की लापरवाही, उसके नतीजे आपको जिंदगी भर भुगतने पड़ सकते हैं. Right? So you need to be slow in reacting. They normally say, na, you listen quickly, but be slow in responding. Right? आपका reaction जो है वो slow होना चाहिए. In anger, in emotion, you don't outburst, because normally that is not right. Think, pray, seek the Lord, see what the Lord is telling you, then you will be able to say. Aaron served faithfully for 40 years with Moses. He was a supporter, a great supporter. He did wonderful things, right? He was there with Moses for 40 years. But this anger and presumption, this last moment, something that he did not control, something that he did not take care of, this costed him entry into the promised land. He could not enter. Even Moses did not, right? He could not enter into the promised land, right? Yet we see that God is merciful yet again, but even in his death, God is merciful. Aaron was honored, right? When we read about his death, we see about the mourning and all. 30 days people mourned for him, right? This is kind of somebody great, right? We see about Joseph and Jacob, we hear about them. But here Aaron is also being mourned. People liked him, right? And God is merciful that he was mourned by the people for 30 days. So that is an honor that is given to him, right? So how do we handle this kind of situations in our own life? Our own frustrations, right? गुस्सा हम सबको आता है. गुस्से में हम सब कुछ ना कुछ कर देते हैं, right? अक्सर जब हमको कोने में पकड़ा जाता है, right? We normally say, what do you do when you are cornered? Right? What do you do when you are pressed against the wall? Right? I simply say, if you know, नींबू निचोड़ने वाला होता है ना, squash. If you put lemon inside that and you squeeze, what comes out? Lime juice. If you put an orange inside that and squeeze, what comes out? Orange juice, right? The question is, when people squeeze you, push you against the wall, what comes out of you? Right? It is what you are filled with. If you are filled with God's word, if you are filled with God's love, if you are filled with God's grace, and you understand that, right? Even if people push you, even if you are pushed against the wall, what will come out of you is not anger, an outburst of anger, but God's grace, God's love. Right? So important thing to remember is, what are you being filled up with? Are you filled up with God's love? Are you filled up with his grace? Do you understand you need his grace on a day-to-day basis? You are dependent on him on a daily basis. Right?
तब कोई भी अगर आपको परेशान करता है और आपको दीवार के साथ पटक देता है या उसको पिनअप कर देता है, तो आपके अंदर से वो गुस्सा और उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की समझाई बातें ही आपके पास आएंगी, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि गलती हम फिर भी करते हैं, हम तो जैसे एक्सक्यूज है ना, मैं तो इंसान हूं, गलत कर देता हूं. What does that mean? Does that mean that my promised land, I will not be able to enter into my promised land? Right? Is that promised land, the heaven that is promised to me, will that be taken away from me? Right? No, there is good news for us, because the New Testament, it promises. The New Testament promises us that even if we fail, our entry into the promised land is not dependent on my things, my deeds, my good works, my failures. No, it is not dependent on that. What is it dependent on? It is based on what Christ has already done for us. Right? So Hebrews 7:23 and 25 it says, now there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office, but because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Right? प्रभु यीशु मसीह, he is there, वो जिंदा है और वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, हमारे लिए इंटरसीड करते हैं. और इसीलिए आपका जो प्रॉमिस लैंड है, जो हेवन है, आपका उसमें प्रवेश आपके कामों पर, आपके नाकामों के ऊपर, आपके फेलियर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट यीशु मसीह के ऊपर है, जिन्होंने ऑलरेडी वो कर दिया है. राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, दैट आवर फेलियर्स आर नॉट, और आवर गुड थिंग्स आर नॉट व्हाट आर गोइंग टू टेक अस इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, बट समथिंग दैट क्राइस्ट हैज ऑलरेडी डन. राइट? But it does not mean, it does not give you a kind of free pass to still do wrong. Right? इसका मतलब नहीं है कि आप जो मर्जी चाहो, जैसा मर्जी चाहो, गलती करो. Right? We see this, Aaron did a mistake and it costed him. Consequences, he was not able to enter. Right? So we are supposed to be renewed on a daily basis. We are supposed to be revived on a daily basis. We are supposed to be transforming into the image of Christ on a daily basis. Okay? That's important to remember. Quickly we'll just close, right? So last point on this one is, holiness is not optional. Remember this, जो पवित्रता है वो आपके लिए कोई एक ऑप्शन नहीं है, कोई एक विकल्प नहीं है, but grace is still our hope. Right? God calls you to be holy, God makes you holy. Don't think that it is one of the option. God asks you to be holy. Right? But we are also under his grace, and we know that by his grace he is going to change us. Okay? So quickly we'll just summarize. We saw Aaron as the mouthpiece. God uses your gifts even when you are not chosen or even when you are not visible. God knows and God will use you. Aaron the failure, हारून की जो असफलता थी, God forgives and God restores. Remember that. Failure is not a person, failure is the event. God has the capability of restoring. परमेश्वर का अनुग्रह आपकी असफलता से बढ़कर है. Aaron the priest, you are called to carry people in your heart and carry their burden on your shoulders. Right? You are interceding for people, the sinful people, with a holy God. Aaron at Meribah, right? Obedience, आज्ञाकारिता जो है, and humility, दीनता, परमेश्वर के सामने जो दीनता है, वो आपकी सामर्थ और आपके बड़े कामों से बढ़कर है. And this is what is going to take you to the end. Right? परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर के सामने दीनता, वो आपको अंत तक लेकर जाएगी. राइट? सो एरन इज नॉट अ हीरो बिकॉज ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट ही हैज डन. एरन इज नॉट अ हीरो बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रांग. राइट? ही इज अ हीरो बिकॉज गॉड्स ग्रेस वॉज स्ट्रॉन्गर देन हिज मिस्टेक्स. गॉड्स ग्रेस इज ग्रेटर देन ऑल दैट ही इज डन. राइट? हिज लाइफ इज क्लियरली स्क्रीमिंग आउट one prominent verse from the Bible, Zechariah 4:6. Zechariah 4:6 says, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Right? Zechariah 4:6 कहता है, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य से सहायता नहीं मिलेगी, परंतु तुम्हें सहायता मेरी आत्मा से मिलेगी. Right? So dear people, please remember this. Right? You have been called,
whatever small your role is, God is watching, and God expects you to be obedient. Right? I'd like to just leave you with these questions. Are you the Aaron in someone's life? Right? क्या आप किसी के जीवन में हारून की भूमिका निभा रहे हैं? Right? Supporting, speaking the truth, standing for what is right. Right? Even though you go unnoticed, even though you are not given the credit, चाहे कोई आपको पहचाने, चाहे कोई आपको उसके लिए इनाम दे या ना दे, लेकिन क्या आप किसी के जीवन में हारून बनकर खड़े हैं कि नहीं? Have you made a golden calf recently? क्या आपने सोने का बछड़ा बनाया है? Come back, come to the Lord. He is faithful, right? He is just, and He is loving to forgive you. आपका कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर आपको क्षमा ना कर सके. Come back to the altar. Forgiveness is open. God's grace is open for all. Do you carry people's name on your heart in your prayers? क्या आप लोगों के नाम को अपने हृदय में लेकर जाते हैं? That is your priesthood. ये आपका याजक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Is there hidden anger or presumption? Right? Do I have ego? Do I have anger in my heart? Right? In small pockets, I think we all do have. Right? Bring it to Jesus. आप इसको यीशु के पास लेकर आइए. वो हमारा सच्चा महायाजक है. He is our greatest and perfect high priest, and He will restore us. Okay? Let's pray. Just take a moment to think about your life, what you have done, where you are today. Think about how much God has been working in your life. Think about how God wants to utilize, what kind of opportunities He has brought in your life, where He is pushing you to use your skills. Maybe you don't even know that you have those skills. Maybe you don't even know that you have the capabilities. But the Lord is building those things in you. Don't think that only when you get a big break, when you get a better role, a better responsibility, are you going to step up. God looks at small things. God looks at what you're doing in smaller areas. Is God trying to use you to be a supporter in somebody's life? Does God wants to use you to be somebody's voice? Is God trying to use you to hold someone's hands up, to lift someone up? God expects us to carry the burdens of people in our hearts. Loving Heavenly Gracious Father, Lord, we thank You for the life of Aaron, a man who failed, was forgiven, and yet he was called again. Lord, we thank You for Your grace in his life. Lord, we pray that You help us to see our weaknesses as not a barrier to Your purpose. But Lord, as Your word says, Your strength is perfected in my weaknesses. Help me to see my weakness as a canvas for Your grace to pour out, to do mighty things in my life, through my life, Lord. Lord, I pray that You make us a royal priesthood, that we are able to intercede on behalf of people, Lord. Help us to carry others to You in our prayers, Lord. Lord, we pray for Your forgiveness and Your grace on things that we don't understand, on things that we do wrongly, on things that we offend You, Lord, in our day-to-day life, Lord. Yes, Lord, help us to see the golden calves that we have made. हमारे जीवन में जो हमने सोने के बछड़े बनाए हैं परमेश्वर, उनको तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए, Lord. Fill us with Your grace today. Use us mightily. In Jesus' name I pray. Amen.